Hello everyone, I hope you're doing absolutely well. My name is Gautam and welcome back to the channel. So sir, welcome है आपका to another capsule revision series. So what is this capsule revision series? So capsule revision series are topics जिसकी very high testability है, जिनकी probability very high है एग्जाम में आने की. तो what do is like we condense and synthesize the entire concepts in such short notes and we supplement it with a lot of question solving ताकि towards the end of the session you are well versed with the concepts एंड आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई है सो दैट यू आर प्रेप्ड ऑल फॉर द एग्जाम्स. ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं. आज हम कौन सा कैप्सूल रिवाइज कर रहे हैं? आज द टॉपिक दैट वी आर रिवाइजिंग इज बिजनेस मॉडल्स. बिजनेस मॉडल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. दिस इज ऑफ द टॉपिक एरिया कॉर्पोरेट इशूअर्स. ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस मॉडल्स? तो बिजनेस मॉडल का मेन मतलब यही है कि बेसिकली हाउ अ कंपनी मेक्स मनी, हाउ डज इट ड्राइव इट्स ऑपरेशंस, वो पैसा कैसे कमाती है थ्रू डूइंग बिजनेस. तो इफ़ यू रिमेंबर द प्रीवियस वीडियो दैट वी डिड वाज ऑन कंपनी एनालिसिस, जहाँ पे दिस वाज ऑफ द इक्विटी टॉपिक, जहाँ पे वी रेड थ्रू अ रिसर्च रिपोर्ट ऑफ किम्स कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसमें वी केम अक्रॉस द वर्ड बिजनेस मॉडल कि हाउ डू वी स्टडी अ बिजनेस मॉडल, कंपेटिटर्स के क्या बिजनेस मॉडल्स होते हैं. तो बिजनेस मॉडल वाज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक पूरा चैप्टर ही दे दिया बिजनेस मॉडल के नाम पे. तो व्हाट इज अ बिजनेस मॉडल? इट इज बेसिकली हाउ डज एन एंटिटी और हाउ डज अ कंपनी मेक मनी. ठीक है, तो आज एजेंडा क्या है ऑफ द लेक्चर? द एजेंडा इज टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ अ बिजनेस मॉडल एंड बाय द एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल. दिस विल डू इन अनदर कैप्सूल रिविजन. तो आज वी आर वांटिंग टू अंडरस्टैंड one, what is a business model, and second, what are the key features of a business model. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. तो व्हेन वी स्टडी अ बिजनेस मॉडल इट टेल्स अस हु द कस्टमर्स आर. तो अगर हम किम्स वाला एग्जांपल ही लेके चले इन माइंड, किम्स वाले एग्जांपल में what was it? Krishna Institute of Medical Sciences. So this was a healthcare entity which has a lot of hospitals under it. So who are the customers? Customers are patients. जो patients आते हैं who are who are suffering or who are having any physical ailment या mental ailment. तो those are our customers. सेकेंड आता है व्हाट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर बीइंग ऑफर्ड. मेडिकल ट्रीटमेंट सर्विसेज आर बीइंग ऑफर्ड. ठीक है. सेकेंड थर्ड आता है वेयर आर द कस्टमर्स रीच. तो यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट चैनल. हाउ डू वी रीच द कस्टमर्स? क्या कस्टमर्स आर फिजिकली एंटरिंग इनटू द हॉस्पिटल और आर देयर ऑल्सो वर्चुअल कंसल्टेशंस दैट वी गिव टू द कस्टमर्स, टू द पेशेंट्स. So it is very important to understand where the customers are being reached. And lastly, how much the customer pays, which talks about the pricing. So how much it pays is basically consultation fee क्या होती है when you enter into the hospital, how much do you pay to visit a doctor. ठीक है. तो इन अंडरस्टैंडिंग अ बिजनेस मॉडल ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि फर्स्ट हु आर द कस्टमर्स, सेकेंड कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स, हाउ आर द कस्टमर्स बीइंग रीच्ड, द चैनल्स क्या है, एंड लास्टली हाउ मच द कस्टमर पेज फॉर द सर्विस और द प्रोडक्ट. ठीक है. What is our role as financial analysts? Our role as financial analysts are we study the business models to understand a firm's strategy, operations, target market, risk and financial profile. तो जब भी when we are going through a research report or when we are researching a company, what do we focus on? We try to understand what the business model is, and by understanding the business model we are able to have a thought of what the strategy would be, उसके operations कैसे होते हैं, उसकी टारगेट मार्केट क्या है, आर देयर एनी रिस्क्स ऑफ इट. ठीक है. एंड अ वेरी क्रूशियल पॉइंट इज डू नॉट ट्रस्ट द मैनेजमेंट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, यू शुड बिल्ड योर ओन व्यू. तो एज फाइनेंशियल एनालिस्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव visualization tools so that we are able to build our own thoughts about the running or the functioning of a business model. Whatever the business, whatever the management gives, हमें as it is on the face नहीं accept करना चाहिए. We should do our own back-end analysis, we should do our own homework and we should substantiate it with proof कि ये है भी या नहीं. क्योंकि the management of a business would always want to appreciate its business, would always want to show it in good light. वो window dress करेगा अपने accounts, वो अपने बारे में good PR करेगा. But as financial analysts, we should read between the lines. ठीक है. इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है. वी कैन कनेक्ट दिस विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें इट टेल्स अस हाउ टू रीड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. है ना, अलग अलग बायसेस आ जाते हैं, अलग अलग व्हाट डज द मैनेजमेंट डू. द मैनेजमेंट ट्राइज टू विंडो ड्रेस, इट ट्राइज टू शो अ बेटर पिक्चर बाय यूजिंग बायस्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज. है ना.
तो वी कैन कनेक्ट दिस विद आर FSA टॉपिक और उससे वील बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर. ठीक है, बट मूविंग अहेड लेट अस अंडरस्टैंड सम वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. फर्स्ट इज प्राइसिंग मॉडल. तो सर व्हाट डू यू मीन बाय प्राइसिंग मॉडल? प्राइसिंग मॉडल का मतलब है कि हाउ कस्टमर्स आर बिल्ड, पैसे कैसे पे करते हैं कस्टमर्स. तो उनकी बिलिंग कैसे होती है, पर यूनिट के बेसिस पे होती है, सब्सक्रिप्शन मॉडल चलता है, या यूसेज के बेसिस पे होती है. पर यूनिट हो गया, जैसे आप किसी अपने रिटेलर शॉप के पास गए, जितने भी आपने यूनिट्स ऑफ चिप्स लिए उसके बेसिस पे यू आर बिल्ड. वन. सेकेंड, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, यू गो फॉर नेटफ्लिक्स या जो भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, दीज आर ऑल सब्सक्रिप्शन बेस्ड, यू पे एंड यू वॉच और यू अवेल द सर्विसेज. लास्टली यूसेज. दिस कम्स जब हम नेटवर्क की बात करें, जैसे हम सर्विस लेते हैं, जियो का हो गया या एयरटेल की हम सर्विसेज लेते हैं, तो जितना हमने जीबी यूज़ किया, जितना हमने इंटरनेट यूज़ किया, उसके बेसिस पे दे गिव अस, दे सेंड अस अ बिल. ठीक है, तो यूसेज के बेसिस पे है, सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे है, या पर यूनिट के बेसिस पे है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. दिस इज नोन एज द प्राइसिंग मॉडल. देन कम्स वैल्यू प्रोपोजिशन. वैल्यू प्रोपोजिशन इज व्हाई वुड द कस्टमर पिक द फर्म्स प्रोडक्ट ओवर द कंपेटिटर. आपका प्रोडक्ट कोई क्यों लेगा? व्हाई वुड अ कस्टमर बी इंक्लाइंड टू टेक योर प्रोडक्ट रादर देन गो टू अ कंपेटिटर? A very basic example that comes to mind is मार्केट में तो there are many brands that give instant noodles, है ना, like Maggi हो गया, टॉप ramen हो गया, and नॉर के भी अब noodles have started to come. But one thing that sets Maggi apart according to me is it advertises itself saying that it is a 2-minute Maggi. So even if you are in a very much hustle बोलेंगे, या when you are in a lot of hurry, तो यू विल ऑलवेज प्रेफर मैगी, बिकॉज यू नो एक टैगलाइन बैठ गई आपके बैक ऑफ द माइंड कि दिस इज अ 2-minute मैगी, जल्दी झटपट बन जाएगा एंड वील हैव इट. तो व्हाई वुड कस्टमर्स पिक योर प्रोडक्ट ओवर कंपेटिटर्स? दिस इज नोन एज वैल्यू प्रोपोजिशन. ठीक है सर. एंड लास्टली इज वैल्यू चेन. वैल्यू चेन इज हाउ द कंपनी स्ट्रक्चर्स इट्स प्रोसेसेस टू क्रिएट एंड डिलीवर वैल्यू. पूरे कंपनी का प्रोसेस कैसे स्ट्रक्चर्ड है ताकि इट यूजेस मिनिमम इनपुट्स एंड इट गिव्स आउट मैक्सिमम आउटपुट. तो वो इंटायर प्रोसेस कैसा रहता है? इज इट वैल्यू एडिंग? डज इट एड वैल्यू, या इज इट जस्ट नॉट वैल्यू एडिंग? कोई फर्क नहीं पड़ता. तो वी शुड वेरी स्पेसिफिकली टेक इन टू कंसिडरेशन जो भी प्रोसेसेस है ऑफ द एंटिटी. ठीक है सर. अब नेक्स्ट आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स. बिजनेस मॉडल्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एक ट्रेडिशनल, एक हो गया इनोवेटिव. तो हाउ डज अ कंपनी डू बिजनेस? 2 टाइप के हो सकते हैं. पहले जैसे करती थी फॉर्मली कैसे करती थी, या हिस्टोरिकली बिजनेस कैसे होते आ रहा है, या तो वो, या आप न्यू, आप इनोवेट कर लो, आप नए बिजनेसेस कर लो. तो व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेसेस? जैसे पहले मैन्युफैक्चरिंग होती थी, बड़े बड़े यूनिट्स, बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते थे. तो दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल. मैन्युफैक्चरर्स जहाँ पे इन्वॉल्व है, मिडलमैन जहाँ पे इन्वॉल्व है, रिटेलर जहाँ पे इन्वॉल्व है. या द सेकेंड टाइप, द इनोवेटिव काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल इज विच आर बेस्ड ऑन इंटरनेट, like the subscription based model, या platform based model like YouTube provides you a platform. You can come, you can create content and you can share it with friends, family, with relatives, or you can share it with the rest of the world. So these are new types of businesses which were not prevalent back in the time. ठीक है. तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस कैसे होते थे, ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स कैसे होते थे? दे यूज्ड टू बी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लॉन्ग स्टैंडिंग मॉडल्स. पहले सदियों से ही होते आ रहे हैं, तो हम भी वही फॉलो करेंगे. On the other hand, how are innovative models different from the traditional models? These are complex, these are innovative, these are new, hybrid, and they are very industry specific. ठीक है सर. अब आता है what is the role of technology in the case of business models? How has technology evolved or how is technology changing the game? तो इसमें आता है टेक्नोलॉजी के वजह से now there are new products and services that we can give to customers. There are new channels that we can reach out to customers. पहले customers had to walk in to buy a t-shirt, but आज आप जाओ, आप मिंत्रा पे जाओ, आप Amazon पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, you can on a click of a screen, on बटन नहीं बोलेंगे, on the click of a screen you can just get your goods delivered at your home. तो पहले you used to go up to a shop, but now that shop has come to you. तो there is this change of channels. डायरेक्ट टू होम आ गया है. डायरेक्ट टू होम क्लासेस होती थी पहले. वी यूज्ड टू फिजिकली गो टू अटेंड क्लासेस, बट नाउ यू आर सिटिंग ऑनलाइन, व्यूइंग इट ऑन यूट्यूब, या यू व्यूइंग इट ऑन द ऐप. तो दीज आर एडवांटेजेस दैट वी आर एबल टू गेन ड्यू टू द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. There are new ways of communication, nothing new. This is very understandable कि because of technology there's a lot of social media that has come up.
we can chat, we can speak to friends who are distant, who are very far away from us, they are just near to us now. Because of social media, because of all these apps, Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram, we are able to reach people much faster and in a more convenient way. And lastly, there are new payment and transaction methods, be it UPI या digital transaction methods, जैसे we go online banking के through. ठीक है सर, तो इससे वी हैव अंडरस्टूड व्हाट अ बिजनेस मॉडल इज. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ अ बिजनेस मॉडल. तो व्हेनेवर वी आर रीडिंग अ रिसर्च रिपोर्ट, जैसे हमने उस दिन किम्स रिपोर्ट भी पढ़ी थी, या आज भी व्हेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल की धंधा कैसे होता है, बिजनेस कैसे होता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड 5 थिंग्स. फर्स्ट इज whom आर वी डूइंग द बिजनेस फॉर, कस्टमर्स कौन है, what business are we doing, क्या products और services हम दे रहे हैं, where the business is being conducted, या how will the customers be reached of the business, कितना हम ले रहे हैं, मतलब what is the consideration involved, कितना पैसा involved है, and lastly how do we do business, are we taking help of someone, are we using some resources for doing the business. ठीक है, let us read each of them and understand in detail. तो की फीचर्स में आ जाता है अंडरस्टैंडिंग whom, for whom are we doing the business, we're doing the business for customers and markets. So very important is to understand what is our target market, are we venturing into a B2B market or a B2C market. आप एग्जाम्पल ले लो एक शॉपिफाई का. शॉपिफाई इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच हेल्प्स यू टू बिल्ड वेबसाइट्स. तो इट इज़ अ B2B ट्रांजैक्शन जहाँ पे Shopify in itself is a business, but it is helping you also set up a business. तो वहाँ पे the target market is a B2B market. फिर आता है geography. What part of the world or what part of a country are you targeting अपने business के लिए? Is it like, are you targeting the South Asian countries? Are you targeting the Western countries? That is very important to understand. And lastly, what are the demographics? तो अगर हम एक apparel, clothing के business में हैं, तो हम वहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हम किसको केटर कर रहे हैं. मेंस वेयर में है, वुमेन्स वेयर में है, या किड्स वेयर में है, अब फुटवेयर में है, या वी आर ऑन एपरल्स, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो डेमोग्राफिक्स, इज इट फॉर मेंस, इज इट फॉर वुमेन्स, और इज इट फॉर किड्स, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. And as market evolves, our target market also evolves. So there is a very classic example that has been given. Tata has moved from hatchback to SUVs. तो जहाँ पहले इंडिगो की बहुत कार्स चलती थी on the roads, now they are being replaced by cars like Nexon, Tiago. तो Tata was able to foresee this because it had kept its target market very clear in mind. है ना? And what is our role as analysts? Analysts infer customer type, यूनिट सेल्स एंड प्राइसिंग फोरकास्ट. तो ये समझ के वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस मॉडल कैसा है, पैसा कैसा कमाती होगी, कौन कौन कस्टमर्स है, कितने का बेचते हैं, उसके बेसिस पे वी आर इवन एबल टू क्रिएट अ फोरकास्ट कि कल को कितना सेल्स होगा. ठीक है सर. नेक्स्ट आता है व्हाट इज द प्रोडक्ट और द सर्विस दैट वी आर ऑफरिंग. तो व्हाट प्रॉब्लम डज द प्रोडक्ट सॉल्व, वाई वुड द कस्टमर्स प्रेफर इट, कोई कस्टमर आपके पास क्यों आएगा ये प्रोडक्ट लेने, आर यू सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, does it imitate or substitute risk. अब let us take an example of transportation of goods. You're transporting goods from A to B. Now there are 3 ways जिसके थ्रू ये जा सकता है, या तो एयर हो सकता है, या रेल हो सकता है, या लैंड के थ्रू हो सकता है. Now how are you wanting to opt, airlines, railways, या थ्रू लैंड. Risks would be different. जब ट्रांसपोर्टेशन में, एयरलाइन में रिस्क there is very little risk, but when there will be risk, there can be a very big repercussion. Rail में there are lesser risk, land में there is no risk at all. There is another, अगर हम sea के थ्रू जाए, there is a lot of risk कि वहाँ पे tides बहुत ज़्यादा होंगी, अगर वहाँ पे कोई टोर्नाडो आ गया, तो there is a lot of risk that is involved if we go through sea. तो all these things should be kept in mind. उसके बाद आ जाता है business customers. What are, अब जब we are providing these products to our customers, तो who are those customers, are they business customers or are they consumer customers. business customers is जो आगे अपने business के लिए यूज करेंगे, consumer customers है जो अपने लिए खुद ही consume कर लेंगे. तो business customers की जो thinking होती है, they are more rational, they are wanting to buy or reselling at a very optimum price ताकि they are able to maximize their profit. So they buy at less and try to sell it at a more thing. However, जो कंज्यूमर कस्टमर्स होते हैं, उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, दे आर ट्रेंड बाय प्राइसिंग, की प्राइस कितना होगा प्रोडक्ट का, डिज़ाइन कैसा है प्रोडक्ट का,
ब्रांड क्या है, उस प्रोडक्ट के एस्थेटिक्स कैसे हैं. तो when a consumer customer looks at products, he has a lot of things in mind. But when a business customer looks at products, he is just looking at one thing, that is profit. Profit कितना कमा पाएंगे. फिर आता है channels. How are we able to reach to the customer? How the firm reaches the customer. So it involves two things: sales and distribution. Channels impact the revenues, cost, profitability, and customer reach. The better the channel, the more widespread the customer reach is. तो पहले क्या रहता था, पहले यूज टू बी ट्रेडिशनल, जहाँ पे एक होलसेलर होता था, वो एक आगे रिटेलर को सेल करता था और फिर रिटेलर वुड सेल इट अहेड टू अ कस्टमर. फिर आ गया था डायरेक्ट सेल्स, वेयर इट गोज डायरेक्टली टू द कस्टमर, जैसे ई कॉमर्स हो गया. अब आ गया है ओमनी चैनल. ओमनी चैनल इज जहाँ पे ऑनलाइन भी है, एट द सेम टाइम ऑफलाइन स्टोर्स भी है. इफ यू वांट टू टेक एन एक्सपीरियंस, जैसे लेंस कार्ट हो गया. लेंस कार्ट इज अवेलेबल ऑनलाइन, बट इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस, यू वांट टू सी हाउ दी स्पेक्टिकल्स आर मेड, यू कैन ऑल्सो गो ऑफलाइन एंड यू कैन गेट योर ग्लासेस मेड आपके सामने. ठीक है. फिर आता है प्राइसिंग. हाउ मच इज द प्रोडक्ट प्राइस एट? इज इट प्राइस एट अ प्रीमियम, डिस्काउंट और एट पैरिटी रिलेटिव टू इट्स कंपेटिटर्स. तो प्राइसिंग क्या है प्रोडक्ट की. अगर 3 प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, तो तीनों की प्राइस सेम है या इज इट डिफरेंट. एक हो सकता है कम हो, एक हो सकता है ज़्यादा हो, एक हो सकता है वुड बी एवरेज प्राइस, ताकि ज़्यादा कस्टमर्स को वो केटर कर सके. Premium justification in the form of features, extra services and brand value. So a very prominent example that comes to my mind is Apple. So Apple always takes a premium for its products. It gives you a smooth, seamless integration across its devices. So there is where it justifies its premium. It gives us a premium out of its brand also. If you're using any Apple product, there is a brand that gets associated with yourself. तो वही वाली बात हो गई. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फीचर्स, एक्स्ट्रा सर्विसेज और ब्रांड वैल्यू. फिर आता है प्राइस टेकर और मेकर. प्राइस टेकर और मेकर, whenever a business is into when an entity is doing business, अब वो प्राइस टेकर हुआ या प्राइस मेकर. प्राइस टेकर इज वेयर लाइक एवरीवन इज सेलिंग द सेम थिंग, तो यू कैन नॉट चार्ज एन एक्स्ट्रा प्राइस, बिकॉज आप ज़्यादा दोगे तो कोई आपसे नहीं खरीदेगा, किसी और से ले लेगा. बट इफ़ यू आर गिविंग अ प्रीमियम, you have the ability to charge a premium. If you're giving additional features, if you're giving additional services, you can always charge a premium for that. ठीक है. फिर आ गया है आपके प्रोडक्ट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है या आप कॉस्ट लीडरशिप के बेसिस पे आप चलते हो. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज लाइक बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स. हाउ कैन यू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स? इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिगो एंड एयर इंडिया. इंडिगो इज लाइक अ लो कॉस्ट कैरियर. आप वहाँ पे जाओ, आपका ट्रैवल हो जाएगा शॉर्ट. बट अगर आप एयर इंडिया में जाओगे, ट्रैवल तो आपका शॉर्ट होगा ही होगा. एट द सेम टाइम दे गिव यू मील्स, दे गिव यू हॉट मील्स, दे गिव यू बेवरेजेस टू हैव. तो इट इज ऑल इंक्लूडेड इन द प्राइस. तो वहाँ पे इट्स जस्ट नॉट ट्रैवल, इट इज ऑल्सो द एक्सपीरियंस. तो इफ दे आर गिविंग यू एन एक्सपीरियंस, तो दे विल चार्ज अ प्रीमियम. तो देयर इज वेयर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कम्स इनटू माइंड. फिर आ जाता है कॉस्ट लीडरशिप. कॉस्ट लीडरशिप का एक ही एजेंडा है, बी द चीपेस्ट. आप कम से कम में बेचो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कमाने की. Same example, Vivo versus Apple. Apple brings out very limited products, brings out products of quality. However, जब Vivo आता है, Vivo comes at a mass scale production. ठीक है. That is where cost leadership comes into mind. Lastly, organization and structure. So this basically explains how is it being done. Does it partner with someone? Yeah, is it going all on its own? So what are the internal assets? How are supplier relations, partners, and how is the revenue cycle? कि सेल करने से कैश में कब तक कन्वर्ट होता है, दैट इज रेवेन्यू साइकिल. Analysts check if the firm has capabilities to deliver consistently. If it is able to deliver consistently, it means that it has quality and it should be taken over other companies. Matlab, it should be taken as a prospective investment if firms want to invest into it. Okay, sir. So this is what I wanted to share about business models. So in totality, we just tried to understand two things: not very heavy, not very bulky. What is a business model and what are the features of a business model? Business model is how does an entity earn revenue? Simple. Second, uske features. When you're trying to earn revenue, so you'll have to look at a lot of things. Ki what are you providing? Whom are you providing? कितने का provide कर रहे हो? कैसे provide करते हो? All these questions come into mind. ठीक है सर. बिफोर वी एंड लेट अस डू सम क्वेश्चंस, ताकि ये कॉन्सेप्ट तो वी आर रेस्ट अश्योर्ड कि बिजनेस मॉडल से कोई क्वेश्चन आएगा ऑफ दिस पार्ट रिगार्डिंग व्हाट इज बिजनेस मॉडल एंड फीचर्स, तो वी आर वेल सॉर्टेड. ठीक है सर. So these are questions. I hope it is visible. Yes. Great.
तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ बिजनेस मॉडल, हमने बिजनेस मॉडल क्या पढ़ा था कि इट टेल्स हाउ डज अ बिजनेस अर्न रेवेन्यू, अ डिटेल्ड बिजनेस प्लान इंक्लूडिंग बजट्स एंड फोरकास्ट, हमने बजट या फोरकास्ट की तो बात पता नहीं करी थी या नहीं, a description of how a company creates and delivers value to customers, lastly a list of competitors in the industry. So the answer would be answer B, a description of how a company creates and delivers value to customers. ठीक है सर, फिर आता है आइकिया, आइकिया का उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, आइकियाज सक्सेस विद सेल्फ असेंबली फर्नीचर एंड लार्ज रिटेल आउटलेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ business model innovation by combining proven concepts, unique invention of new furniture technology, or commodity pricing model. Commodity pricing model, so I don't think. B is also not the right answer. Unique, there is no technology that furniture is providing. The answer would be A, जिसमें कह रहे हैं business model innovation by combining proven concepts. ठीक है, what happens in IKEA, does anyone know? IKEA में क्या होता है, products are kept over there and they are dismantled in a dismantled condition. You go home and you assemble it yourself. So there is no technology that they're providing, it is just combining proven concept. ठीक है सर, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट आता है इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट टिपिकली एड्रेस्ड बाय अ बिजनेस मॉडल, who are the firm's target customers, we look at the target customers when we're looking, how much tax does the firm pay annually, what product or services does the firm offer, the answer is B, we are not concerned with what is the tax being paid by the entity. फिर आता है टेस्ला's annual report description of products, sales channels and innovation emphasis is an example of, तो ये टेस्ला का एक एनुअल रिपोर्ट दिया था, आई विल शो दिस आफ्टर द एग्जांपल, उसमें इट टॉक्स अबाउट, इट गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, ऑफ इट्स सेल्स, ऑफ इट्स चैनल्स, हाउ इट रीचेस आउट and its innovation emphasis is an example of management providing insights into the firm's business model, value proposition limited to pricing comparisons, या third risk disclosure unrelated to business model. अगर business आप अगर Tesla is talking about its products to you, is it talking about its risk? नहीं, I don't think. Second, value proposition which is limited to pricing comparison, does it only talk about money कि वो पैसा कैसे कमाती है, या is it wanting to show an insight into the firm's business? First, which is management providing insight into the firm's business model कि business कैसे करती है. Lastly, why should analysts not rely solely on management's description of the business model? Management may lack financial expertise. I don't think expertise तो होता ही है. Management's description may be biased or incomplete. Correct. And lastly, business models are irrelevant for company analysis. Very, very incorrect. Very important. Business models are relevant. So management's description may be biased or incomplete. ठीक है सर, फिर आता है नेक्स्ट, बिजनेस मॉडल फीचर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड अ कोर एलिमेंट ऑफ अ बिजनेस मॉडल. डू वी लुक एट हु आर द कस्टमर्स? यस. डू वी लुक एट व्हाट द प्रोडक्ट इज और द सर्विस इज? यस. डू वी लुक एट एनुअल डिस्क्लोजर्स? नो, वी डोंट लुक एट एनुअल डिस्क्लोजर्स, देयरफॉर सी इज द आंसर. फिर आता है सेकेंड क्वेश्चन, टेस्ला's decision to vertically integrate battery production is an example of focusing on which business model feature. So what they're trying to say is like Tesla is into the manufacturing of electric vehicles. So electric vehicles में battery लगेगी. अब rather than going out and buying battery from someone else, from some other entity, it creates its own battery. It manufactures its own battery. So what is this an example of? Is it an example of value proposition? Is it an example of value chain and organization? या is it an example of pricing? Pricing का example नहीं होगा, pricing की तो कोई बात ही नहीं हुई. Is it how it is providing value and why a customer should opt for Tesla? No, it is talking about the value chain and the organization. How is it organized? How the business of Tesla is organized. फिर आता है in business model analysis, the where question usually refers to the distribution channels and customer reach, firm's geographic headquarters की तो कोई बात ही नहीं हुई थी, competitive pricing relative to peers. So we are looking at distribution channels and customer reach की where, how do we reach the customers, where are we reaching the customers, at our place या at customer's place या at some place in between. Which of the following is most directly related to a company's value proposition? Value proposition is
Value proposition is what? Value proposition is why would a customer opt for your product over a competitor's? What are you providing extra? जैसे वो मैगी वाला एग्जाम्पल था, मैगी is providing faster noodles to you. So customer loyalty and reasons for preference, supplier network, taxation policies. A customer would not be affected by supplier आपका network क्या है. He would not be affected by आपकी taxation policy क्या है या taxation policy क्या है in the environment. He would be affected by the customer loyalty and reasons for preference. Last question of the day. If a company outsources manufacturing but focuses on design and branding like Apple, which business model feature is most emphasized? Does it talk about business proposition? Does it talk about channels? Or does it talk about key assets or partners? हमने key assets और partners में पढ़ा था how a business is done, क्या resources are used, are there any partners that are involved. ये partners ही तो हो गए when we are outsourcing. एक पार्टनरशिप टाइप ऑफ मॉडल ही तो हो गया कि आप इतना कर लो हम इतना ही कर लेंगे. वी कैन नॉट go into another thing, we cannot produce more, so we are outsourcing one of the manufacturing of our component. ठीक है सर. So this was a short revision session on business models. I hope it added value to you. If it added value, do like the video. Before the video ends, do like it, do subscribe, share it with people around. We are all set to be coming out with a batch that will start from mid-October. So very excited to share this all with you. Like the video, subscribe. You can connect with me on all of my social media channels on LinkedIn, Telegram, Instagram, everything is given in the description. And these questions that we have practiced, I'll share it over my Telegram channel. In case you want, please print it, you can practice it. And these are very exam representative questions, so rest assured your preparation is really well. Okay. And in case you wanted to copy, please pause the screen and you can write it down. You have any queries, please reach out. And yes, that is it. I hope this added value, and if it did, do like the video again. Thank you. Bye bye. Take care.